Hello viewers, welcome back to my channel. Okay, so are you preparing for the set examination? So it's a quick recap about the famous author, Indian English author Arun Kolatkar. So it's a short video on a recap, and if you're really serious about your preparation and want a more videos on English literature, so in the description box I will provide the my latest videos which is useful, that is PYQs plus the concept. So let's see. Arun Kolatkar, born in 1932, died in 2004, was a seminal bilingual poet who profoundly influenced Indian English literature. So उनके की लिटरेरी वर्क्स है जेजुरी. जेजुरी पे क्वेश्चन आता है हमेशा. जेजुरी एक कलेक्शन है 31 पोएम्स का जो कोलटकर का मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क माना जाता है. जेजुरी को कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज में मिला है. जेजुरी का जो पब्लिकेशन ईयर है वो पूछा गया था एक बार एग्जाम में. 1976 में से लिखा गया था, 1977 में से कॉमनवेल्थ प्राइज मिला है. देन इसमें क्या है, इट रिकॉर्ड द विजिटर्स डे लॉन्ग जर्नी टू द पिलिग्रिम साइट ऑफ जेजुरी इन महाराष्ट्र बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट. जेजुरी की थीम्स एक्सप्लोर करते टेंशन बिटवीन द फेथ एंड द स्केप्टिज्म, मॉडर्न रैशनलिज्म एंड एंशियंट ट्रेडिशन. नोटेबल फीचर क्या है इस वर्क के? आयरनी एंड सटायर. कोलटकर यूज द शार्प irony to critique the commercialization of religion and the decay of the sacred sites. The poem Makran depicts a modern man choosing the cigarette over the prayer. So, how the business is now taking place, commercialization is taking place of a religion and decay of the sacredness in it. Then an old woman, a famous poem within the collection that highlight the survival and dignity of beggar women against the backdrop of ruin. Then आता है काला घोड़ा poems 2004. Published shortly before his death, this collection shifts focus from the sacred town to the gritty street of Mumbai. काला घोड़ा की थीम्स क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स करता है अर्बन लाइफ, फोकस करता है मार्जिनलाइज्ड डिस्पेंसेबल पीपल, बेगर, स्ट्रीट क्लीनर, लेपर्स, स्वीपर्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. इसे क्रिटिसाइज भी किया गया हिपोक्रेसी ऑफ प्रोग्रेस एंड द वास्ट गैप बिटवीन द मुंबईज कैपिटलिस्टिक एडवांसमेंट. कौन सी स्टाइल यूज करते हैं ऑथर इसमें? नोन फॉर हिज माइक्रोस्कोपिक डिटेल and realistic observation of mundane object like the kerosene cart or the potato peeler. Then Sarpasatra, it is in 2004, a long narrative poem है अरुण कोलाटकर की that retell the snake sacrifice myth from the Mahabharata. Okay, so allegory of it uses the ancient myth of King Janmejay revenge against the snake to critique modern political extremism or the genocide cycle of vegans. Subversion, Kolatkar subvert the traditional epic by focus on the victim and using contemporary slang to make the myth relevant to the current geopolitical conflict. Then आता है The Boat Ride and the Other Poems, published in 2008 and 10, the published posthumously after his death. Style है इसमें इनका often experimental. This poem shows early interest in the surreal and absurd aspect of everybody's everyday experiences. Core theme and style है. He is a English poetry is often seen as a translation of his mother tongue Marathi, and unlike his predecessors who also sophisticated idioms, Kolatkar used a direct colloquial style called the spade a spade. Okay. This is of the short recap of Arun Kolatkar.